Namaste bachcho. Today we'll start with a new chapter, chapter number 9, and the name of the chapter is Madhumakkhiya. So Madhumakkhiya means honey bees. So let's start with the summary of this chapter. So as the heading tells you, Madhumakkhiya, that means honey bees. So honey bees, they prepare their own house, and their house, we say it hives. Now in every hive there is one queen, and the queen only lays eggs, and the other honeybees, they work very hard. Now let's read this chapter to know more about these honeybees. So first we'll start with the Kathin Shabd. As you can see here, few Kathin Shabds, that is difficult words. Now the first one is Madhumakkhiya, that means honey bees. So it's a plural form. Chhatta means hive, it's their home. Pratyek means each. Mehnati means hardworking. Sadharan, ordinary. Adar means respect. Shuddh means pure. Sangrahit means to collect. Swasthya means health. Now let's read this chapter. So here first paragraph. मधुमक्खियाँ अपना घर स्वयं बनाती है। उनके घर को छत्ता कहते हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी रहती है। बाकी सब काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है। मधुमक्खियाँ बहुत मेहनती होती है। Now let's understand the meaning of few words here. Madhumakkhiya means honey bees. Apna means their. Ghar, house. Swayam means ourselves. So the meaning is bees make their own house. उनके घर को छत्ता कहते हैं. So here छत्ता means hive. So their house is called the hives. प्रत्येक छत्ते में एक रानी रहती है. So here प्रत्येक means each and Rani means the queen. So in each hive there is one queen bee. बाकी सब काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है. So here बाकी means rest of them. So सब means all. काम करने वाली means those who do the work. They are known as the workers. So all the other bees are known as the working bees. मधुमक्खियाँ बहुत मेहनती होती है. So here मेहनती means hard working and बहुत means very. So the honey bees are very hard working. Next paragraph. रानी मधुमक्खी कोई काम नहीं करती, वे केवल अंडे देती है। साधारण मधुमक्खियाँ रानी का बहुत आदर करती है। वे रानी मधुमक्खी को माँ समझती है। रानी मधुमक्खी ठाठ से रहती है। उसकी रक्षा के लिए अंगरक्षक होते हैं। कुछ मधुमक्खियाँ उसकी सेवा करती है, कुछ उसे खिलाती है। उसके लिए सबसे शुद्ध मधु रखा जाता है। मधु इकट्ठा करने वाली मधुमक्खियाँ फूलों से मधु इकट्ठा करती है। वे उसे छत्ते में संग्रहित करती है। So now let's understand the meaning of few words. Second paragraph. रानी मधुमक्खी कोई काम नहीं करती. Here काम नहीं करती means does not do any work. So the meaning is the queen bee does not do any work. वह केवल अंडे देती है. So केवल means only, अंडे means eggs. So they only lay eggs. साधारण मधुमक्खियाँ रानी का बहुत आदर करती है. So साधारण means ordinary. आदर means respect. So ordinary bees respect the queen bee. वे रानी मधुमक्खी को माँ समझती है. So here माँ means mother. So the other bees consider queen bee as the mother. रानी मधुमक्खी ठाठ से रहती है. So here the meaning is the mother bee lives leisurely. Next line. उसकी रक्षा के लिए अंगरक्षक होते हैं. So here raksha means to protect. Angrakshak means bodyguard. So she has bodyguard to protect her from danger.
कुछ मधुमक्खियाँ उसकी सेवा करती है. So here कुछ means some, सेवा means serve, and some of the honey bees serve the queen bee. कुछ उसे खिलाती है. खिलाती means to feed, and some of the honey bees feed her. उसके लिए सबसे शुद्ध मधु रखा जाता है. So here शुद्ध means pure, madhu means honey. So for the queen bee, they keep the purest honey. Next paragraph. मधु इकट्ठा करने वाली मधुमक्खियाँ फूलों से मधु इकट्ठा करती है. So here इकट्ठा means to collect. फूलों means flower. So the working bee collects the honey from different flowers. वे उसे छत्ते में संग्रहित करती है. So here संग्रहित means to collect. So they collect the honey from the different flowers and store it or collect it in the hives. Next paragraph. रानी मधुमक्खी के बीमार पड़ जाने पर सारा काम ढीला पड़ जाता है. सारी मधुमक्खियाँ उदास हो जाती है. वे काम करना छोड़ देती है. रानी मधुमक्खी छत्ता छोड़कर चली जाती है. कुछ दिनों बाद रानी मधुमक्खी स्वस्थ होकर लौट आती है. Now let's understand the meaning of few words. Here बीमार means to fall sick. ढीला पड़ना means to become loose. So the meaning of this sentence is when the queen bee falls sick, all the works become loose. सारी मधुमक्खियाँ उदास हो जाती है. So here sari means all, udas means sad or depressed. So when the queen bee becomes sick, all the other bees becomes sad. वे काम करना छोड़ देती है. So here काम means work. छोड़ देना means to quit. So they all quit their work. रानी मधुमक्खी छत्ता छोड़कर चली जाती है. So here छत्ता means hive and छोड़कर means leaves. So when she falls sick, she leaves the hive and comes out. कुछ दिनों बाद रानी मधुमक्खी स्वस्थ होकर लौट आती है. So कुछ दिनों means after some days. स्वस्थ means healthy. After some days, the queen bee returns home healthy. Next paragraph. छत्ते में दोबारा खुशियाँ छा जाती है. सभी मधुमक्खियाँ अपने अपने काम में लग जाती है. वे फूलों से मधु इकट्ठा करने लगती है. छत्ते में उनकी मधुर आवाज़ गूंजने लगती है. इससे पता चल जाता है कि रानी मधुमक्खी अपने छत्ते में स्वस्थ होकर लौट आई है. Now let's understand the meaning of few words here. So here कुछ दिनों बाद रानी मधुमक्खी स्वस्थ होकर लौट आती है. छत्ते में दोबारा खुशियाँ छा जाती है. So here दोबारा means again and खुशियाँ means happiness. So happiness again returns to the hive. Next line. सभी मधुमक्खियाँ अपने अपने काम में लग जाते हैं. So all the bees they start doing their work. वे फूलों से मधु इकट्ठा करने लगती हैं and they start collecting the honey from the flowers. छत्ते में उनकी मधुर आवाज़ गूंजने लगती है. So मधुर आवाज़ means sweet voice and गूंजना means echoing. So her sweet voice starts echoing in the hive. इससे पता चल जाता है कि रानी मधुमक्खी अपने छत्ते में स्वस्थ होकर लौट आई है. So here lौट means has returned. The meaning of this line is this shows that the queen bee is healthy and she has come back to the hive. Next, we'll move on to the Shabdarth, that is word meaning. So here you can see few words with their meaning. So first one, Madhumakhi, honey bee, Chatta, hive, Pratyek, each, Rani, queen, काम करने वाली, workers, अंडे, eggs, साधारण, ordinary, आदर, respect, ठाट, leisurely, मधुर आवाज़, sweet voice, रक्षा, protection, अंगरक्षक, bodyguard, शुद्ध,
pure, madhu, honey, इकट्ठा, collect, संग्रहित, collect, ढीला पड़ना, slow, स्वास्थ्य, healthy, दोबारा, again. Next, we have Paryavachi Shabd. So you can see here, Madhur means sweet. Paryavachi Shabd, Meetha or Mithas. Phul means flower. Paryavachi Shabd, Pushp, Suman. Next one, Samp. Samp means snake. Sarp or Nag. And the last one, Madhu. Madhu means honey. And the Paryavachi Shabd, Shahad or Makrand. So these are the Paryavachi Shabd. Next, you have an activity. You have to read the first 5 lines of this chapter, record it and submit in Teams. That's all for today. We'll meet in the next class. Thank you.